Hello everyone, welcome to the classroom of pharmaceutical jurisprudence. As we have studied earlier, the Code of Pharmaceutical Ethics, the new chapter under the Unit 1, the Code of Pharmaceutical Ethics, that is the science of moral or the Code of Moral Principles. So we have looked up behind the lecture series that about the definition of ethics, the one example of ethics as well as the classification of code of pharmaceutical ethics. Now we'll discuss those four code of pharmaceutical ethics one by one and how they are work for us as a noble profession, how it will increase our professional value as well as the professional ethics. So the four principles under code of moral ethics, you have to remember that you have to write in the exam according to this serial number and according to the exact word. So you have to just remember the J P P M P. J P E P M P. So what are these J P P and M P? We are one by one discussing them. So first code of pharmaceutical principle is pharmacist in relation to his job. Okay. Second principle is pharmacist in relation to his trade. Third one is pharmacist in relation to his profession, and fourth one is pharmacist in relation to his medical profession. So for this, we have to just remember this term, that is J for job, T for trade, P for profession, and MP for medical profession. And first are the same pharmacist in relation to his. Okay, so four principles, that is J, P, P, M, P. Pharmacist in relation to his job, pharmacist in relation to his trade, pharmacist in relation to the profession, pharmacist in relation to the medical profession. So ethics generally allow us to understand as betterment of our profession. So there is some responsibility as a pharmacist towards our job, towards if we are a trade, towards our profession, towards the medical profession. If we are using the pharmacist profession for our livelihood, for our livelihood, that is providing us the food, that providing us the shelter, that providing us the earning. So we have some certain responsibilities towards the pharmacy profession, and that has been laid down by the book or code of pharmaceutical ethics. Now this we will discuss one by one. The first one, that is pharmacist in his relation to his job. So what are the responsibility of pharmacist towards his job? So firstly, we are classifying it conduct of pharmacy. P is handling of prescription. C is handling of drugs. D pharmaceutical service to patient
and E apprentice pharmacist. So we have some certain responsibility towards the job, and the responsibility towards job has been divided according or under this classification. That is conduct of pharmacy, handling of prescription, handling of drugs, pharmaceutical service towards the patient, and the apprentice pharmacist. So let us discuss one by one. That is conduct of pharmacy. So pharmacy generally as a shop according to the Pharmacy Council of India and according to the Pharmacy Act 1948. So if you own a pharmacy shop or a pharmacy distribution service, so there are some conduct you have to maintain to allow or to increase the value or professional ethics. Like if you are using some place, that should not be randomized or that should be properly cleaned and properly organized. So if there are drugs in your store and in your shop, that should be properly maintained and organized. That is the conduct of pharmacy. So अगर कोई भी दुकान में सही तरह से एक डिस्प्ले होता है, सही तरह से अगर आपके ड्रग्स के ऑर्गेनाइज होता है, तो वो देखने के लिए भी अच्छा लगता है। और इसी अच्छे के हिसाब से आपका जो एथिकल वैल्यू, वो एथिकल वैल्यू भी बढ़ता है, आपके नजर में भी बढ़ता है, और वो एथिकल वैल्यू क्या होता है कि जो कस्टमर है और जो कंज्यूमर है उसके नजर में भी बढ़ता है। तो इसलिए टुवर्ड्स इफ दिस the pharmacy is your job, then there are some ethical value towards the good conduct in your pharmacy. Next, the point is handling of prescription. If you are a pharmacist, so you need to know how to handle a prescription. For any kind of concern or any kind of issue, you should not misread or you are giving any information towards the patient. Here, as we have discussed, the pharmacist as we are the middleman between physician and the patient. So the instruction given in the prescription is the information from the physician towards the patient. So we have to convey the message in a clear manner. तो वो क्लियर मैनर ऐसा होना चाहिए कि कोई भी मिसरीड नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं भी मिस्टेक है, तो यू शुड नॉट रेक्टिफाई द मिस्टेक। आपको मिस्टेक रेक्टिफाई नहीं करना है। अगर आपको लगता भी है कि आपके हिसाब से कि फिजिशियन को भी गलत दवा दिया है या कुछ दिया है, तो आप उसे कांटेक्ट कीजिए। नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो भी नंबर दिया गया है या उस पेशेंट का उन डॉक्टर का फिजिशियन का नंबर लीजिए और उसके बाद उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए कि आपने जो मेडिसिन दिया है या आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स है इसमें क्या कोई चेंजेस है, तो उनके साथ डिस्कस कीजिए। आप डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये दवाई रॉन्ग है, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एथिक्स, और ये आपके एथिकल वैल्यू में बहुत ज्यादा नुकसान करता है। कैसे कि सपोज यू आर मिसरीडिंग वन प्रेस्क्रिप्शन, आप अगर सही से दवाई नहीं दे सकते हो तो ये फिजिशियन के लिए जैसे खराब है, पेशेंट के लिए भी वैसे ही खराब है। अगर किसी तरह से पेशेंट को पता चला कि नहीं फिजिशियन ने सही दवाई दिया था, लेकिन जो फार्मासिस्ट है उन्होंने सही से ये प्रेस्क्रिप्शन को रीड नहीं करा और हमें गलत दवाई दिया, तो ये आपके जो भी प्रोफेशन है और आपकी जो भी जॉब है उस पर इसका असर जरूर पड़ेगा और आपको ये दिखाए हुए कुछ दिनों बाद, क्योंकि आपके नॉर्मल शॉप पे कस्टमर या कंज्यूमर वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो दैट इज द बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यू कि आपके जो आपको प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग करना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। क्या उसमें दिया हुआ है, क्या इंग्रेडिएंट है, क्या दवाई है, उसको सही तरह से दो। ऐसा नहीं कि आपके पर्सनल इंटरेस्ट या प्रॉफिट की वजह से आप कोई भी दूसरा दवाई किसी भी पेशेंट को दे सको। थर्ड पॉइंट इज द हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स। तो जैसे प्रेस्क्रिप्शन के बारे में आता है कि प्रेस्क्रिप्शन सही से रीड करना चाहिए, वैसे ही हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स, कौन से ड्रग को किस तरह से हैंडल करना चाहिए वो आपको आना चाहिए। जैसे हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स के अंदर नॉर्मल है कि जैसे एक्सपायरी डेट के ड्रग्स हो गया, तो वो ड्रग्स को कहाँ रखना है या कहाँ नहीं रखना है। इसके साथ साथ कोई भी ड्रग्स है जिसका स्टेबिलिटी कुछ अलग टाइप का है, जैसे सपोज इंसुलिन को जनरली रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए।
तो आप अगर इस इथिक्स के दौरान आप इंसुलिन को रेफ्रिजरेटर नहीं अंदर नहीं रखते हो या जो भी प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन है वो स्टोरेज कंडीशन को मेंटेन नहीं करते हो तो वो ड्रग्स के लिए सही नहीं है। अगर ड्रग्स के लिए सही नहीं है तो आपके जॉब के लिए सही नहीं है। अगर एक्सपायर हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है कोई भी ड्रग्स तो वो ड्रग्स आपके जॉब में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए जो भी ड्रग्स है उस ड्रग्स को प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करना आना चाहिए हमें। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल सर्विस इन टुवर्ड्स द पेशेंट। तो ये लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था कि एज ए मिडिलमैन और एज ए नोबल प्रोफेशनलिस्ट being as a pharmacist how we have to handle our patient in any condition or any circumstances we have to give the best patient care or health care towards the patient. So towards the noble profession we have to maintain the pharmaceutical service towards the patient for 24 hours. If any time any concern comes, so we have to handle in a way that we are pharmacists and being in a limitation of that pharmacist or being in a limitation of this pharmaceutical level, we have to solve the problem. And if you do not solve the problem, so don't be a doctor. Just ask them or just advise them to go to the proper doctor for proper doctor counseling and for the proper diagnosis. You should not diagnose the patient medical problem or medical concern. Next, the last is the apprentice pharmacist. So this is important as you are going to a pharmacist in hospital or you are going to pharmacist in any private other organization. So there, after passing diploma or degree for some interest, someone came as the apprentice pharmacist. So you have to give them the proper training, and after proper training only you are allowing to give them the certificate. जैसे डिप्लोमा सेकेंड ईयर के बाद 3 महीने की ट्रेनिंग होता है। तो ये 3 महीने की ट्रेनिंग पे जो भी स्टूडेंट आपके पास आता है दैट इज द अप्रेंटिस फार्मासिस्ट। और अप्रेंटिस फार्मासिस्ट का प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दिलवाना ये भी फार्मासिस्ट का एक रोल है। और क्योंकि वो फार्मासिस्ट एज ए जॉब में है तो वो जॉब का एथिक्स बनता है कि उसे प्रॉपर तरीके से अप्रेंटिस फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग करवाए, उसके बाद ही उसको जो भी नॉर्मल सर्टिफिकेट है या नॉर्मल उसके क्रेडेंशियल है वो क्रेडेंशियल दिया जाए। नहीं तो क्या होगा कि नॉर्मल कोई भी जो अप्रेंटिस फार्मासिस्ट आपके पास सीखने आ रहा है वो जनरली क्या होगा कि वो सही तरह से नहीं कर पाएगा चीजें। अगर सही तरह से वो नहीं कर पाता है ये इन फ्यूचर लाइफ और इन फ्यूचर जॉब तो वो होगा कि कहां से उसने ये ट्रेनिंग लिया था और उसके अप्रेंटिस कौन था। क्योंकि आप वहां पे एज ए मेंशन रहोगे एज ए अप्रेंटिस और एज ए मास्टर आपके सिग्नेचर रहेंगे तो दैट इज नॉट एथिकल फॉर योर प्रोफेशन फॉर योर जॉब। बिकॉज ऐसे अगर करते रहोगे तो एक ना दिन आप पकड़े जाओगे, इसके साथ साथ आपके जॉब पे वो चीजें आने वाली है, तब आप जनरली इस एथिकल कलर के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो एक बार रिकैप करते हैं इस पोर्शन में हमने क्या सीखा। दैट इज code of pharmaceutical ethics, the first point of pharmacist in relation to his job। फार्मासिस्ट को अपने जॉब पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन से पॉइंट है जिसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। तो फर्स्ट इज द conduct of pharmacy, that is the good conduct must be maintained in pharmacy whether in the handling and storage of drugs। So next is handling of prescription, whether there are prescription maybe there are some mistake or there may be some wrong, you should not misread that and according to that you have to behave like pharmacist not as doctor। So you have to contact the responsible physician or responsible doctor regarding that misconception or maybe some mistake। So you should not rectify it on your personal and you should not prescribe the other medicine that is not in the prescription। Third point is handling of drugs। So you have to you must have the knowledge to properly handle drugs in your store। And the next point is pharmacist in service to patient। In patient service you should be always prepared as pharmacist and being as pharmacist your prime objective is to service the patient as a prime healthcare professional। So you have to be the professional that way। And for the apprentice pharmacist
You should train your apprentice pharmacist in a proper way, and then you will certify them as a training, and proper handling of that certification is must for the future role as future job prospect of yours as well as your apprentice pharmacist. That is all for today's lecture. Thank you for today's lecture and attending today's lecture. So next class we'll study about the other pharmaceutical ethics, that is code of pharmaceutical ethics, that is pharmacist in relation to state, or if possible then other two. Thank you for your time.